Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Sansaar. Myself, CA Bhawna Dawar, on the series of IAS IFRS. So today, on the continuation of our series, we are on the topic of IAS 2, that is inventory. Let's start a business. हम एक business start करते हैं. First question arise in my mind, in which product, in which service I should deal in that business. So that product, that services in which we are dealing, उसको हम standard की language में, उसको हम law की language में बोलते हैं inventory. Now IAS to inventory, ये हमें क्या बताता है कि हमें इस प्रोडक्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस वैल्यूएशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे डील करना है. सो दिस इज अबाउट IAS 2. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके, नाउ इफ आई से व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सिंपली इट इज टेलिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्री. ये हमें बता रहा है कि हमें इन्वेंट्री को अपनी अकाउंटिंग बुक्स में किस ढंग से दिखाना है, हमारा लॉ क्या कहता है, क्या हम उससे कंप्लाई कर रहे हैं, हम IAS 2 के हिसाब से उसे अपनी बुक्स में दिखाएंगे. बुक्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो IAS 2 हमें प्रोवाइड करता है द गाइडेंस ऑन, बेसिकली ये हमें बताता है हमें इन्वेंट्री की कैसे कॉस्ट डिटरमिन करनी है जब हमने परचेज की, नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, and what is the cost formula. See, I can say the underlying idea of this particular standard is the valuation of inventory should be the lower of cost or NRV. That means inventory को, inventory की जो cost है या फिर NRV है, उसकी lower value को मैं अपनी बुक्स में प्रेजेंट करूंगी. बुक्स में प्रेजेंट करूंगी, क्वेश्चन अराइजेस कहाँ प्रेजेंट करूंगी, बैलेंस शीट में, P&L में, नोट्स टू अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर्स में. ये हमें IAS 2 गाइड करता है. ओके, नाउ लेट्स सी द स्कोप. सी, IAS 2 किस पे एप्लीकेबल है? इट एप्लीकेबल्स टू ऑल इन्वेंट्री. दैट मींस इट्स अ वेरी जनरल स्टैंडर्ड फॉर ऑल द इन्वेंट्री. Are you aware that whenever there is a specific guidance for anything, general guidance always overruled by the specific standard? That means कुछ हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कुछ इन्वेंट्री के बारे में कुछ अलग बोलते हैं, उसके ऊपर IAS 2 एप्लीकेबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द PPT फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर IAS 32 कुछ और कहता है, IFRS 9 कुछ और कहता है. Biological assets related to agriculture activity and agriculture produce at the time of harvest, इसके ऊपर IAS 41 कुछ और कहता है. So standard will overrule the general and इसके ऊपर IAS 2 applicable नहीं होगा. Okay, अब इन दो के ऊपर तो हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, पर दो ऐसी और चीजें हैं जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल IAS 2 की वैल्यूएशन उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगी. What are those? The producer of agriculture related product. See, this is an industry norm that we measure it on NRV instead of lower of cost or NRV. Commodity broker trade. In this we actually measure it fair value less cost to sell. Now the question arises, where the difference will go? Difference means, suppose today NRV is 25. Tomorrow NRV is 30. Now where we will show this 5 rupees? Now in this we will take hit of P&L. So in the P&L we'll show it as expense. Now it depends on either it's expense or income, but we will take the hit of P&L in case of change in NRV. So very simple. IAS 2 will not be applicable where we are having some specific guidance, or IAS 2 will not be applicable on these two things. One is a producer of agriculture and forest product, and second is a commodity broker trader. Okay.
Now, very common question, what do you mean by inventory? As I told you, जिस product में हम deal कर रहे हैं, that is my inventory. If I am having a manufacturing process, then starting from raw material, I will make some finished products. Some product will be in work in progress. So that raw material, work in progress, and finished goods, these three will be our inventory, will be valued at as per IAS 2. Okay. Now, one more very important point which IAS standards say, that spare parts. See, sometimes spare parts are a part of property, plant and equipment as per their respective standard. But sometimes some spare parts does not meet the criteria of that standard, of that PPE standard, property, plant and equipment standard. तो यार उसका क्या करें अब हम, ना उसमें गया तो उसको हम यहाँ IAS 2 में लेके इन्वेंट्री में उसको हम एज पर IAS 2 डील करते हैं, उसकी वैल्यूएशन हम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV को लेते हैं. सो आई कैन से 4 चीजें हो गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स व्हिच डू नॉट गेट into the PPE as per their respective standard. Okay. Now next point comes, how I will recognize. When I will recognize, when I will purchase it, I will recognize at its cost. उस time I don't know the NRV. See, मैं आज लेके आई, I am not aware from NRV yet, right? So I am taking it at a cost. But मुझे मेरा एक reporting period होता है. Say मैं जनवरी टू दिसंबर का 31 दिसंबर पे अपना रिपोर्ट कर रही हूँ. सो 31 दिसंबर को मेरे पास जो स्टॉक रिमेनिंग है, जो इन्वेंट्री रिमेनिंग है, उसको मैं कैसे मेजर करूंगी? इट विल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एक्चुअली NRV? सी, आई परचेज अ प्रोडक्ट, ओके, आई नो दैट इट्स सेलिंग प्राइस इज 120 and I know that 20 more rupees will be incurred to make it as a sale. So selling price is 120, 20 more will be there to make it sell. So my NRV will be 100. Suppose my cost is 110. Now I said the underlying principle of this standard is lower of cost or NRV. See, इसका रैशनल, इसका प्रूडेंस क्या है? अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरी कॉस्ट 110 है, मेरी NRV 100 है, कॉस्ट 110 है, NRV 100 है, तो अगर मैं इसको कॉस्ट पे दिखा दूंगी तो मेरी बैलेंस शीट, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड दिखाई देंगी एंड आई नीड टू गिव द फेयर व्यू. सो मैं इस प्रिंसिपल को लेके चलती हूँ कि लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट. जब मेरा वो प्रोडक्ट इतने पे सेल ही नहीं होना तो मैं उसको इस कॉस्ट पे कैसे दिखा सकती हूँ? अगर कॉस्ट मेरी कम है तो कॉस्ट पे, NRV मेरी कम है, दैट मींस उसकी सेलिंग वैल्यू कम है तो उस पे. ओके, नाउ आई एम सेइंग इट अगेन, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें बेयर एक्ट देता है, which I just brief out in this PPT. Let's come one to one. Okay, purchase price, simply जिस प्राइस पे आपने परचेज किया, that is the purchase price. Okay, non-refundable import duties and taxes. See, if it is a refundable, then you will not add. Of course, you will get the refund of it. Why you will add? It is not your cost. So non-refundable tax and duties. Fine. Transport and handling charges. You having, like, you incurred some transport cost, you incurred some other cost, that will be part of your cost. Other directly attributable cost. Now what do you mean by this? These are some required expense. For example, I am importing some inventory from another country and they said it is necessary, it is mandatory to pay the insurance charges to the seller. So it is mandatory, I need to pay, it will become the cost, it will become the part of my cost since it is mandatory. But what about it's a optional, it's voluntarily, then it will not be a part of
cost. Okay. Trade discount. Everyone aware from the trade discount, discount. So that will deduct it. It is my income. You can say it is my income for us. It will be deducted. Okay. Now come to the conversion cost. What do you mean by conversion cost? If I am in a manufacturing process, I need to put some labor. I need to take some overhead expenses. I need to give electricity charges. That all will become a part of conversion cost. Systematic allocation of production overhead, it is again like electricity expenses and other overhead, stationary expenses. All this will part of the cost. Now, special consideration of joint product and byproduct. There is a specific clarification of joint product and byproduct in our standard. Now, what do you mean by joint product? When one production process produces two products, then these two products are known as joint products. That means एक production process पर दो products. Okay. अब point ये आता है, एक ही तो production process है, एक ही तो cost incur हुई है, products दो है, मैं किस पे क्या cost लूँ? Standard is saying उसकी cost को joint product के selling price के ratio पे distribute कर लो, distribute करके उनकी अपनी अपनी cost ले लो. And that will become your purchase cost. That will become your total cost. Okay. Next is our byproduct. Now, what do you mean by byproduct? Unwanted product. हमने कोई product expect ही नहीं किया था कि produce होगा. Still produce हो गया. हमने नहीं किया. हमने कोई efforts नहीं किए. Now, this byproduct is actually income for us. You can say it's a benefit for us. So, sale price of byproduct will be deducted from its cost. That means trade discount and selling price of byproduct, they both will be deducted from the cost. Right? Next is other cost. If I am incurring any expense to remove the place hindrance, that means मैं कोई ऐसा खर्चा कर रही हूँ place hindrance को remove करने के लिए. मैं जम्मू एंड कश्मीर से कोई प्रोडक्ट दिल्ली ला रही हूँ, मेरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, प्लेस हिंड्रेंस खत्म हो रही है, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट. इसके ऊपर वी आर हैविंग सम स्पेशल स्टैंडर्ड बट अ बिट पॉइंट ऑफ इट. सपोज आई एम अ रियल एस्टेट ओनर. फाइन, आई एम अ ओनर ऑफ अ बिल्डर. मैं एक पूरा अपार्टमेंट बना रही हूँ. मुझे 10 साल लगेंगे. आई नो मैं बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना रही हूँ, 10 साल लग जाएंगे. उसके ऊपर मैंने कुछ लोन लिया हुआ है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट, उसकी बोरोइंग कॉस्ट, उस लोन के ऊपर पे किया गया इंटरेस्ट विल बी पार्ट ऑफ माय कॉस्ट एज पर IAS 2. इसमें स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन आपको बोरोइंग कॉस्ट IAS 23 में मिलेगी व्हेन वी विल डू दैट. नेक्स्ट एक पॉइंट और कहता है IAS 2 बेयर एक्ट, बोलता है deferred settlement terms. Okay, I purchased some raw material that cost was 100 in a normal market. I said to supplier, okay, I will give you 120 rupees instead of 100, but after 2 years. So point arises, मैं cost में 100 rupees लूँ या 120 लूँ? This standard said ये क्रेडिट टर्म्स आपने अपने पर्सनल पर्पस से लिए हैं. यू कैन डिनाई इट, यू कैन लाइक कि आप इसे नहीं लेते, इसीलिए ये 20 रुपीज विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. क्लियर? सो अगेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV we discussed, cost we discussed. Lower of these two will be our valued of the inventory which we will show in a financial statements. Okay. अब हमने ये देखा क्या इंक्लूड होगा. अब बिट पॉइंट क्या इंक्लूड नहीं होगा. नॉर्मल वेस्टेज हम इंक्लूड करते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज हम एक्सक्लूड करते हैं. ओके. स्टोरेज कॉस्ट अगर रिक्वायर्ड है मींस सपोज वी आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर. सो लिकर को कंजम्पशन प्रोसेस में लाने के लिए वी नीड टू प्रिजर्व इट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. ओके, सपोज वी प्रिजर्व इट फॉर 4 years
and we are paying rent for that preservation, for that go down for the 4 years, that rent will be added in a cost. But after preserving it, when this liquor will be ready for consumption, when this liquor will be ready for consumption, after that I am storing, I am taking the go down just for the inventory purpose कि okay कोई customer आएगा and it will be sell, that rent will not be added. तैयार हो चुकी थी, कंजम्पशन होने के लिए रेडी थी, सेलर की वेट की जा रही थी, उसके लिए वो गोडाउन का रेंट आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा. सो कंजम्पशन तक बनने तक का पहला पार्ट हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, उसके बाद हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट कॉस्ट फॉर्मूला. देयर आर सम कॉस्ट फॉर्मूलाज which we take at the time of valuation. Simple. If it is a specific identification, that means we are having an order of some customized product. कुछ कस्टमाइज है, कुछ टेलर्ड प्रोडक्ट है, हम सामने वाले के कन्वीनियंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. So that total cost will become a part of our inventory. That's pretty fine. Now FIFO, first in first out. That means जो लास्ट में बचा स्टॉक उसकी वैल्यू में लेटेस्ट प्राइस से करूंगी, लेटेस्ट परचेज प्राइस से करूंगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर मैंने पूरे साल हर मंथ में 10-10 यूनिट का स्टॉक खरीदा है डिफरेंट प्राइस का, और 31 दिसंबर को मुझे अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी? लास्ट में मेरे पास 10 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है, लास्ट में मेरे पास 10 यूनिट्स का स्टॉक बचा है, उस 10 यूनिट के स्टॉक की वैल्यूएशन दिसंबर के परचेज प्राइस से की जाएगी. बिकॉज हमने माना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जनवरी टू नवंबर वाला पहले आउट हुआ होगा क्योंकि वो पहले इन हुआ था. सो दिस इज आवर फीफो मेथड. Next is our WAC, weighted average cost method. Okay. Now, what do you mean by weighted average cost? Do not take your January price. Do not take your December price. Just take an average. Suppose you purchased 2 units, one for 2 rupees, one for 4 rupees. Don't take 2. Don't take 4. Just take the 3 rupees as an average and do the valuation. Okay. Next, we are having like okay. If you are having the whole information, sometimes business में आपके पास information miss हो जाती है, उसमें भी आपको ये standard कहता है कि take some standard cost. That means आप normal industry को देख लो, उसमें आपकी raw material, labor और overhead का क्या price चल रहा है, just add it and take the cost. एक बोलता है ये retail method, जिसमें ये कहता है अब selling price minus gross margin करके उस cost को ले लो. That means अगर आपके पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फीफो या फिर वैक लगाओगे. अगर आपके पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर रिटेल कॉस्ट के मेथड को लोगे. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल मेथड. दिस इज सम केस स्टडी, यू कैन रीड इट आउट. फाइन फाइन फाइन. Now recognition and disclosure. Now this is a good point, that how I will recognize it. See, I told you earlier, whenever there is a change in NRV, we take a hit of P&L, right? मैं कॉस्ट में तो देखो चेंज नहीं होगा, मैंने एक बार जो कॉस्ट इनकर कर दी वो कर दी, लेकिन एनआरवी में चेंज हो सकता है. सपोज मैंने आज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी वाली अपनी वैल्यू दिखा दी बैलेंस शीट में, नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड तक एनआरवी फिर से चेंज हो गई. नाउ हाउ वी विल ट्रीट this part, this NRV gap, how we will treat? Now in this we will take the hit of P&L. Now this is very important point from the accounting perspective. Okay, next is disclosure in financial statement. This disclosure we will read from again a company annual report. Now this is our TCS annual report. TCS, let's come to the balance sheet first. Now this is a inventory part. Now firstly, where it is present, can you see this is the part of current asset, this is the part of current asset. Okay, now this is a note number 10E. Let's come to the note number 10E. Okay, 10E. Now let's read. Inventory consists raw material,
sub-assembly and component, work in progress, store and spare parts, and finished goods, as I told you. Okay. Inventory are carried at lower of cost and NRV as per IAS 2. Okay. The cost of raw material, sub-assembly, and component is determined on WAC basis. They are taking WAC. Okay. Weighted average cost play there good. Cost of finished goods produced or purchased by group includes direct material, labor cost, and a portion of manufacturing overhead, as we read in IAS 2. So it shows the value. Now, this is how a company is presenting the inventory and giving its notes. These are the disclosures which you can see. The Bear Act actually says this you need to check, this you need to give in your financial statements. So yes, companies are complying the IFRS. They are giving the financial statement as per IFRS or IAS. So you can check it through annual report. Okay. Now, in the gradual slides, I gave some difference in the IGAP and IAS 2. You can read it. And there is no difference between IFRS and Ind AS between these two, right? For the inventories. Thank you.